Hello everyone, my name is Ravi Kumar. Hope you guys are doing good in these COVID times. I've secured rank 84th in this Civil Service Examination 2020. This was my second attempt. In my first attempt I got Indian Railway Account Service. और मेरा academic background के बारे में थोड़ा brief कर देता हूँ. I'm a civil engineer graduate from IIT Roorkee. I'm 2019 batch. और ये session answer writing के ऊपर होगा. In this I will try to share my ideas regarding some of the nitty-gritties of answer writing that I have followed. Regarding my GS score, this time it has been 417, which considering this year's marking scheme has been pretty decent. So I will be trying to share some of the ideas on some of the logical basis. First, answering some of the general queries regarding when should I start writing answers. So should it be from the first day onwards or should it not be? Well, I would say writing an answer whenever you are comfortable is good. But usually this stage comes when you have been well versed with the books once or twice, when you have read them quite a few times and then you are able to formulate some of the answers, then you feel that you are in the position where you can write the answers. But suppose if you have not written any answer and recently the prelims result has come out and you are clearing it, I think there's a time that you should quickly start writing answers because you have enough content, you have already prepared for prelims, you have cleared it. So I think this is the right time that you should really start focusing on answer writing. Second general query that I get is candidates do not get enough information or do not get enough confidence whether they can write the answer or not. Whenever they see a question, they feel that they do not have enough content. Well, in order to solve this problem, I believe that there's a need to build the confidence, and confidence comes through few areas. First is multiple revision of the static portion. So even if you keep your sources minimum, try to have the maximum number of revisions so that you have certain level of confidence that yes, I know this particular topic and I can answer this topic. Second is try to make some of the notes of some of the topics. The notes need to be crisp, they need not to be too elaborative, they need not to be looking very beautiful, they should be of a caliber where you can understand them. And finally, I would say in order to build confidence, there is a need to write some of the mock tests. You might not need to get them checked, but you need to write some of the mock tests or at least some of the questions on daily or regular basis. I would say maybe weekly basis or daily basis, whatever you are comfortable with. With this, with time, confidence generates, and finally you are able to write some of the good answers in the mains answers. Now, jumping into the basic answer writing portion. It has two major areas, which I would say one is content, another one is presentation. In content, we have both the areas, static and dynamic, and as we all know that there is a need that we have good understanding of the static portion, and there is also a need to collaborate it or correlate it with the current or the dynamic areas of the topic. Second is presentation. So we are going to look above these areas one by one as the session is proceeding. First, talking about the word limit and the time limit of any question. Whenever we see a question paper, there are two segments. One is 10 marker, another one is 15 marker. For 10 markers, the word limit given is 150 words, and for 15 markers, the word limit given is 250 words. You know, it is important that we adhere to that time limit. It is not hard and fast rule that you have to write the entire answer in exact 150 words or in exact 250 words. You can write your answer roughly in 130 words to 170 words in 10 markers. Same way goes for the 250 word questions. It's important that you stick to this in order to achieve the entire answer within the time limit, because ultimately time limit has to be adhered to because you have to complete the entire paper. So roughly when you calculate how much time you should devote mathematically, it comes around 7.5 minutes for 10 markers and 10.5 minutes for
15 markers. However, there is no need to adhere to this hard and fast. For some of the questions you can take 8 minutes, 8.5 minutes. For other questions where you are not very much comfortable, you can quickly write those answers in 6 minutes, 5.5 minutes, or etc, etc. At the end of the day, you have to make adjustment. If you are taking more time in a specific question, you are supposed to reduce the time in other questions. So that is one area. Another one is, whenever you get the question paper, it is very important to read the questions very carefully. In order to achieve that, you can read the question twice. Now, whenever you're reading the question twice very carefully, you'll be able to understand that there are multiple areas asked in the questions, and at the end of the question there are going to be keywords or the trailing words which set how the entire question has to be answered. For example, in some of the questions it can be written like basically enumerate the causes. In that, you only have to list some of the causes, and there is no need to elaborate or analyze those points. Whereas in some of the questions, ऐसा हो सकता है कि आपको critically analyze के लिए पूछा जाए. In that, you have to critically analyze the points that you are given. So it's very important that you read the question very carefully and read the last word about which the question has been asked very carefully, so that you answer it very to the point. Third is keeping your answer multidimensional and multifaceted. It is very important at two areas. One is, it gives the examiner an idea that you are able to know and perceive that entire topic in multiple areas. Second is, it also helps you in generating multiple points. If you develop this habit of thinking anything in multidimensional areas, you will never run out of content. For example, if a question comes regarding the poor status of women, then you can think about the poor status in different dimensions. For example, in political dimension, you can think that there is low representation of women in Lok Sabha or in Rajya Sabha, etc, etc. Economic angle also, you can think that there is glass ceiling in corporate sector, etc, etc. And in societal angle, you can think the patriarchal setup of the entire Indian society. So there are multiple areas that you can think of, and if you are able to think of and present it in the answer, trust me, it is a very, very good answer. Next thing is completing the entire paper, and in that I mean completing all the questions in the paper. I'm in a position where I can say that if you are able to complete all the questions with certain level of logic, and you have covered almost all the areas, then your chances of getting selected for selection for the interview are pretty much sure. So it is very, very important that you write all the questions. Now, in order to achieve that, there are two important things that you should take care of. One is the time management. As I've already said, there is importance of keeping note of every question, how much time you are taking, and you have to make adjustment. So keeping all that in mind, you will be able to write all the questions. Second is answering those questions that you are not aware of. There are going to be many questions, maybe 4 or 5 questions per paper that you are encountering where you have no idea of, or you have very vague idea of. In such situations, you are supposed to write at least something, maybe periphery things. हो सकता है इधर उधर की चीज़ें आप लिख दो, ज़रूरी नहीं है कि आप exactly to the point answer लिखो, but जितना हो सके उतना relevant answer लिखो. And trust me, examiner want to give you the number. He will give you 2-3 numbers even on that question that you are not very much sure of. So you have to develop that skill, that how to write answers even if the question is not known to you. After this, let's talk about the general answer. How does it look? And how does it look? Also, how does my answer look? My general structure was always to write an introduction, body, and conclusion. And while writing that, I was making very much calculations that introduction कितना बड़ा होना चाहिए, body कितनी बड़ी होनी चाहिए, conclusion कितना छोटा होना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि आप 10 मार्कर क्वेश्चन में एक पूरे पेज का इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, फिर बॉडी पे नेक्स्ट पेज पे जा रहे हो. फॉर एग्जांपल, अगर एक ह्यूमन बॉडी है तो हेड इतना बड़ा होना चाहिए, एंटायर टॉर्सो लाइक डिसेंट साइज का होना चाहिए और लेग डिसेंट साइज की होनी चाहिए. दैट सेम गोज फॉर द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर. So it should be well distributed. Second is, the question has a chronology. Whenever a question is asked, for example, a question is asked, what are the causes and consequences of flood? So it has a chronology of, it has asked the causes first, and then it has asked consequences second. So you need to introduce a question, introduce your answer, then while writing the body, you need to follow the chronology. So first you're writing the causes of the flood, then answering it in 4, 5, 6 points, whatever points that you have, and in the next part, you are answering the consequences of the floods. After this,
these are the areas through which a general answer could have been written, but considering the competition level that we have these days, it's very tough to gain a very good number, and some of the people are actually getting very high number in GS, even in optional, by writing by making some adjustment in the general answers only. So how to make those adjustment and how to get more number? There are very basic things that you can do in order to get your number very good. First is writing more and more examples and facts. When you're writing an example, it's important that you make it look that you have written an example. ऐसा ना हो कि आपने example लिखा और examiner ने notice भी नहीं किया. For that, what I used to do is, whenever there is a point end होता था, मैं second line में जाता था, थोड़ी जगह छोड़ता था और फिर example लिखता था easy and उसको circle करता था. With this, almost all my examples were at least visible, even if the examiner is not reading my entire answer, he can see कि मैंने examples लिखे हुए हैं. So इसमें he get impressed, or maybe he become more liberate to give number. Second is, question is कितने examples लिखे. Some of the people ask कि क्या हर point के ऊपर example लिखें, etc etc. In my opinion, examples 2 या 3 हर part में होना sufficient है और बहुत ज़रूरी भी है. अगर आप हर पॉइंट के ऊपर एग्जाम्पल लिखने लग जाओगे, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक एरिया जैसे कॉजेज ऑफ फ्लड, उसके ऊपर आपने 6 पॉइंट लिखे और हर किसी के नीचे आप एग्जाम्पल लिख रहे हो, तो इससे 2 चीज़ों का घाटा होता है. पहला, आपके पास वर्ड लिमिट क्रॉस कर दोगे, और दूसरा आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा. सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू आर राइटिंग 2 or 3 एग्जाम्पल्स इन एवरी सेगमेंट ऑफ द आंसर, एंड एग्जाम्पल भी उनका लिखना जिनके अच्छे एग्जाम्पल्स आपके पास हों और आपके पास ऑलरेडी एक सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो उस एग्जाम्पल के बारे में. एंड ट्रस्ट मी, when you are well versed with prelims and you are writing for the mains, you have enough content and enough examples that you can write in almost all the segments. Second is regarding facts. See, whenever you are writing facts, it's important that you quote the source also. If you don't know the source, it's well fine, you can just simply write. But अगर आपको source पता है, for example, economic survey बताता है कि so and so is the expenditure in education, so and so is the expenditure on health sector, etc etc. तो आप अगर source को quote करते हो, it gives more authenticity to your example. और अगर आप उसको underline करते हो तो examiner उसको easily देख सकता है, and he will, trust me, will give you more marks as compared to आपने सिर्फ एक ऐसे fact लिख दिया. After this, second thing that you can do to make more remunerative numbers in the answer is to make your presentation look very good. Up until now मैंने content के ऊपर बात किया था और how to manage the time उसके ऊपर बात किया था, but presentation is very important area of all this. आपने देखा होगा एक सेम आंसर अगर 2 लोग लिखते हैं तो 2 लोगों को अलग अलग नंबर मिल सकते हैं, कंसिडरिंग कि उसका प्रेजेंटेशन कैसा है. तो बेसिक प्रेजेंटेशन जो मेरे यूजुअली आंसर्स की होती थी, वो मैं पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखता था, मैं पॉइंट फॉर्म में लिखता था. बट आई हैव ऑल्सो सीन सम ऑफ द टॉपर्स कॉपी जो पैराग्राफ फॉर्म में लिखते थे, उनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर आए हैं. आई वॉज नॉट कंफर्टेबल विद इट, सो आई डिड नॉट राइट पैराग्राफ फॉर्म. तो मैं हमेशा पॉइंट फॉर्म में लिखता था, वो मेरे लिए ईजी होता था और क्रिस्पियर होता था. Second is making diagrams to make your answer look very good. So you can use many diagrams. For example, अगर आर्ट एंड कल्चर का कोई क्वेश्चन आता है, you can make diagrams of the temple architecture of Nagara style. अगर ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन आता है तो you can make ample diagrams. आपके पास इंडिया के बहुत सारे diagrams हो सकते हैं. For example, अगर सोलर पोटेंशियल ऑफ इंडिया के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो आप जल्दी से एक हिंदुस्तान का मैप बना सकते हैं और उसमें वो एरिया दिखा सकते हैं जहाँ पे सोलर रेडिएशन ज़्यादा है. ज़रूरी नहीं है कि आपने वो देखा ही हो, वो आपने पढ़ा ही हो बुक में. आप खुद से भी सोच के सोलर रेडिएशन का डायग्राम बना सकते हैं. खुद से सोच के आप फ्लड प्रोन एरिया ऑफ इंडिया बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल, फ्लड कोस्टल रीजन में आ सकता है और जो गंगा ब्रह्मपुत्र इनके बेसिन में आ सकता है. सो वी टोटली नो, वी कैन मेक द एग्जाम्पल्स, द डायग्राम्स राइट देयर ऑन द स्पॉट ऑल्सो. देन अगर मान लेते हैं अगर आपके पास डायग्राम्स इनफ नहीं है, देन हाउ टू मेक योर आंसर लुक मोर अट्रैक्टिव. फ्लो चार्ट इज द सेकंड बेस्ट ऑप्शन. अगर आपके पास फ्लो चार्ट अगर आपने बनाए हैं डायग्राम, अगर आपने क्वेश्चंस में, इट मेक्स योर आंसर लुक वेरी गुड. फॉर एग्जांपल, फूड चेन के लिए आपने अगर कोई क्वेश्चन आता है, अगर आप एनवायरनमेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, फूड चेन दिखाना चाहते हो, तो आप उसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं कि पहले ये ट्रॉफिक लेवल होता है, इसके बाद ये ट्रॉफिक लेवल होता है, फिर ये ट्रॉफिक लेवल होता है. इट्स अ फ्लो चार्ट ओनली. द अदर वे दैट यू कैन डू इज यूज हब एंड स्पोक मेथड. हब एंड स्पोक मेथड मैं डायग्राम में बहुत ज़्यादा यूज़ करता था. फॉर एग्जांपल, आई कैन जस्ट, इफ़ आई एम रनिंग आउट ऑफ द टाइम और मेरे को कोई एरिया कवर करना है आंसर का, फॉर एग्जांपल मुझे कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज लिखने हैं और मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, तो व्हाट आई विल डू इज़ क्विकली मैं कॉजेज लिखूंगा, सर्कल बनाऊंगा और हब एंड स्पोक मेथड से 3-4 कॉजेज दिखा दूंगा. इससे टाइम कम लगता है और ज़्यादा एरिया भरता है, तो एटलीस्ट एग्जामिनर को ये फील नहीं आता है कि मैंने आंसर प्रॉपरली आंसर नहीं किया है. Second is whenever you are trying to
make to show differences between two different things, try to use table. For example, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि what was the difference between Gandhian style and भीमराव अम्बेडकर style, so you can make a table and differentiate उन दोनों की स्टाइल को. इससे आंसर अच्छा लगता है और आपका ज़्यादा पॉइंट्स आते हैं लिखने के लिए. Then there is no need to just make इंडिया का मैप या फिर वर्ल्ड का मैप. यू कैन यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्राम्स. पाई चार्ट बना सकते हो, हिस्टोग्राम बना सकते हो, फ्लो चार्ट बना, आप कुछ भी बना सकते हो, अलग अलग तरह के डायग्राम बना सकते हो. फॉर एग्जांपल माइग्रेशन के लिए मैं पाई चार्ट बनाया करता था. तो इससे दिखता है कि आपके जो कॉपी है वो सिर्फ एक फ्लो में जा रही है बट बोरिंग नहीं हो रही है. सिर्फ आपका आंसर में सिर्फ पॉइंट्स नहीं है, इसमें एक क्रिएटिव डायग्राम्स वगैरह भी हैं. एक एडिशनल एडवाइस मैं देना चाहूँगा जो मैं पूरी नहीं फॉलो कर पाया, बट इफ़ एनीवन कैन फॉलो दैट, व्हेनेवर यू आर मेकिंग डायग्राम आप उसको एनबॉक्स ज़रूर करें, आप उसको डब्बे में ज़रूर डालें. इससे थोड़ी प्रेजेंटेशन नीट लगती है और एग्जामिनर को लगता है कि इसने थोड़ा टाइडी काम किया है. सो इट साइकोलॉजिकली थोड़ा अच्छा फील होता है उससे. So these were major points regarding how the answer can be made little better. Specifically, now quickly I'll be winding up this video by quickly telling about GS 1, 2, 3, how what are the few things that you can make, do, and what are the few adjustments that you can make. In GS paper 2, for example, when the question comes regarding polity and governance, you can make your answer look very good by inculcating few of the things. For example, you can inculcate constitutional articles, like article 14 में right to freedom, right to equality है, article 90 right to freedom के बारे में बोलता है. तो अगर आप आर्टिकल कोट कर देंगे, article 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दिस, इससे आंसर बहुत अच्छा लगता है और सब्सटेंटिव लगता है. अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में लिख सकते हैं तो आप वो बहुत अच्छी बात है. फॉर एग्जाम्पल 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन बॉडी क्रिएट करी इंडिया में. अगर आप वो एग्जैक्टली कोड कर सकते हैं, इससे आंसर आपका बहुत ज़्यादा डायनामिक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कंटेंट एनरिच लगता है. फिर आप कोड कर सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, DP, इनको आप बहुत ज़्यादा कंक्लूजन में भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन आता है, आप इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि एज इट इज़ ऑल्सो एनविसाज्ड इन DPSP, दिस इज़ अ राइट स्टेप टू डू. इससे आपको कंक्लूजन की भी कमी नहीं पड़ेगी. Or one basic idea that I can give about the conclusion is your conclusion should look forward looking. It should not look any regressive or depressive or anything. It should look forward looking. There are multiple ways through which you can get your conclusion. For example, DPSPs, you can like exactly remember the DPSP. 48A में forest के बारे में बोला है, etc., या 48 में बोला है. You can directly quote them. Second is you can use government schemes to wind up your answer. For example, so and so steps are taken in Ayushman Bharat, and there is a need to implement that on a very good scale. Then you can also use some of the slogans. For example, doubling the farmer income as quoted by Ashok Dalwai committee. You can also use SDG goal, sustainable development goal. So if you have these lists in your head, you will never run out of the conclusion. Not in just GS paper 2, 1, 2, 3, 4. You will never run out of the conclusions. Then जजमेंट्स भी आप बहुत ज़्यादा इंक्लूड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल प्रकाश सिंह जजमेंट अगर आपको प्रिजन रिफॉर्म्स के बारे में करना है या पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली किसके बारे में, बट आप जजमेंट्स को इजीली आप यूज़ कर सकते हो. बिल्स, एक्ट्स, इन सबको यूज़ कर सकते हो पॉलिटी के क्वेश्चन में. व्हेनेवर अ क्वेश्चन कम्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशन, GS पेपर 2 ओनली, अगर इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मेरे हिसाब से. अगर आप नहीं बनाएंगे इट्स टोटली फाइन, पर अगर आप बनाते हैं तो इससे बहुत क्लैरिटी लगती है. फॉर एग्जांपल अगर इंडिया के नेबरिंग कंट्री के साथ बॉर्डरिंग इशू अगर कोई पर क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली इंडिया और पाकिस्तान का मैप बना सकते हैं और उसमें दिखा सकते हैं कि देयर इज़ POK, देयर इज़ सर क्रीक, हेयर वी हैव सम अदर इशूज़. इससे आपका समय कम लगेगा, जगह ज़्यादा भरेगी और एग्जामिनर को भी एक्चुअली फील आएगा कि इसको एक्जैक्टली पता है ऑन ग्राउंड वेयर आर द रियल issues. So you will get better number in my opinion. Then in international relation में again need to have very good well versed idea about the current scenarios. For example, RCEP में इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया, etc. So you should do that. In GS paper 3, for example, in economics, see स्टैटिक पोर्शन इकोनॉमिक्स में जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है एग्जैक्टली सेम आप यूज़ कर सकते हो विद फ्यू ऑफ द एडिशनल टॉपिक्स जो शायद से आपने GS में प्रीलिम्स में नहीं पढ़े होंगे, वो मेंस में पढ़ सकते हो. उसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के टाइम में जो हो रहा है वो इसमें करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. तो फॉर एग्जांपल NPA प्रॉब्लम्स इन बैंक, स्टेटस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया, व्हाट आर द सेक्टर, हाउ द 3 सेक्टर्स ऑफ GDP आर परफॉर्मिंग इन इंडिया. तो अगर आप करंट से बहुत ज़्यादा वेल वर्स है और ट्रस्ट में अगर आपके पास किसी भी एक कोचिंग मटेरियल का करंट मटेरियल आपने फॉलो किया है, आपके पास इनफ एम्पल
सब्सटेंस है, डेटा है, सब कुछ है आपके पास. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू अप्लाई देम इन द आंसर एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई देम इन द आंसर. यू हैव इनफ कंटेंट. देन GS3 में एक डिजास्टर मैनेजमेंट भी आता है, एंड एनवायरनमेंट आता है, सिक्योरिटी आता है. दीज आर द एरियाज विच माइट बी नेग्लेक्टेड इन प्रीलिम्स. ट्राई टू कवर देम विद एटलीस्ट सर्टेन लेवल ऑफ सर्टेनिटी. आप कुछ सोर्स ले सकते हैं, अपने कोचिंग मटेरियल का सोर्स ले सकते हैं, या फिर आप मार्केट में बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं. इनकेस अगर आप कहीं पे भी नहीं जाना चाहते हैं, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं. बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं. ऑलमोस्ट सारा थिंग कवर्ड है उनमें, जो भी टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, सो डिजास्टर मैनेजमेंट में आई विल जस्ट से वन और टू पेक्युलर थिंग्स. डिजास्टर मैनेजमेंट में इट्स इंपॉर्टेंट कि आप सारे डिजास्टर्स के ऊपर 4 या 5 पेक्युलर पॉइंट्स याद रख लें, या वो कहीं पे लिख लें, एक जगह नोट कर लें, ताकि जब कोई क्वेश्चन आता है तो आप जनरली तो लिखोगे डिजास्टर मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज द डिजास्टर, बट उसके अलावा आप कुछ स्पेसिफिक पॉइंट भी लिखोगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर साइक्लोन के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो आप अर्ली वार्निंग सिस्टम के ऊपर लिखोगे, जो इंडिया के पास है, कौन कौन सी सैटेलाइट उसके लिए यूज़ हो रही हैं. तो इट्स बेटर कि आप पहले से ही आप नोट करके रखें कि ये एरियाज़, ये डिजास्टर्स है और इन डिजास्टर मुझे ये एरियाज़ कवर करने हैं. देन अगेन डायग्राम्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट, और बहुत ही चुनिंदा 3-4 डायग्राम्स ये जो ऑलमोस्ट सब बनाते हैं. इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उनको याद कर लें या एक कॉपी में कहीं पे नोट कर लें. फॉर एग्जांपल, प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर, पोस्ट डिजास्टर, आप इनको एक बहुत ही अच्छा डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखा सकते हैं. बहुत ही कम है, इतना ज़्यादा नहीं है, तो आपको ज़्यादा इशू नहीं आएगा. जस्ट ट्राई टू गैदर देम एंड नोट देम इन एट वन लोकेशन. देन एनवायरनमेंट के ऊपर आजकल के जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर एक्चुअली करंट ड्रिवन होते हैं. फॉर एग्जांपल, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, एयर पोल्यूशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा. इसके लिए आपके पास जो करंट अफेयर्स से जो सोर्सेज हो रहे हैं, आपने अगर किसी भी, जैसे मैंने बोला, जैसे भी अगर आपने किसी भी कोचिंग मटेरियल का इंस्टीट्यूट यूज़ किया है, आप उसको अच्छे से फॉलो करें, अच्छे से रिवाइज करें. आपके पास एम्पल पोर्शंस होंगे, एम्पल एग्जाम्पल्स होंगे. दिल्ली में कितना AQI गिर गया था दिवाली के टाइम एट्सेट्रा एट्सेट्रा. काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपके पास ऑलरेडी होंगे, आप इस उनको अच्छे से रिवाइज करें. एंड finally, I would like to say almost everything is done in terms of answer writing, but one thing that I would like to say is what is neglected by most of the people is seeing toppers copy. आप किसी भी एक टॉपर की या 2 टॉपर्स की आप कॉपी उठा के देखिए और आपको वाकई में रियलाइज होगा कि देयर इज नथिंग दैट दे आर डूइंग एक्स्ट्रा. They are just doing something additional and some other different ways, and it is not tough to copy that. आप उनकी कॉपी लीजिए, उनके टेम्पलेट को देखिए, वो कैसे अलग अलग पार्ट्स को क्वेश्चन कर रहे हैं, डब्बा डाल रहे हैं, कैसे डायग्राम्स बना रहे हैं, उनके डायग्राम को एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए. 1-2 कॉपीज आप अच्छे से पढ़िए, आपको इनकलकेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा रिम्यूनरेटिव है. आप 10 पेपर लिख लिए, बट अगर आप मेरे हिसाब से अगर आप 10 टॉपर्स की कॉपी देखेंगे, उससे आपकी आंसर रिफॉर्म ज़्यादा अच्छे होंगे. हाँ, 10 पेपर लिखने के भी अपने फ़ायदे हैं, उससे आपको टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बट अगर आप 10 कॉपी उसके साथ और देख लेते हैं कि टॉपर्स की 10 भी बहुत ज़्यादा होती हैं. मैंने 2 कॉपियाँ देखी थी और उससे मुझे बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हुई थी, एंड आई ट्राई टू मोल्ड माई वे इन टू देयर स्टाइल, एंड ट्रस्ट मी, इट मेड ऑल द डिफरेंस. एंड एट द एंड ऑफ द डे आई वुड लाइक टू से कि टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर ज्वाइन करें. अगर आपके पास टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का टाइम नहीं है या फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, तो आप ज़रूर टेस्ट लिखें, क्योंकि वो फ्रीली अवेलेबल है मार्केट में, और उसको किसी से भी चेक करा लें, किसी अपने सीनियर से या कोई और जो आपके साथ कलीग होगा जो आपके साथ ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा है, उसको चेक करा लें, या फिर आप खुद ही कंपेयर करें अपने आंसर्स को टॉपर्स के आंसर से जिन्होंने वो पेपर दिया है. ईजिली मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है. आप ये सब कीजिए, ट्रस्ट मी, योर नंबर विल rise very high. Thank you for watching TKT. Please do like and subscribe to the channel. Thank you very much.